Alright, ladies and gentlemen, we're at Studio Cusp. Cusp is an eye contact dating app that connects two people based on the eye contact they make in real life. So think about all the times you've crossed paths with an attractive stranger and felt like you made eye contact with them but didn't know what to do after that. So now you have Cusp, where you can just go press a button that says I made eye contact, and if the other person that you made eye contact with also presses that button, then you both can match. So that's the whole idea. We're at, like I said, Studio Cusp. Cusp doesn't involve swiping, because swiping is just pointlessly scrolling through profiles in your free time. It kills your dopamine, it leads to addiction. Cusp is purely based on eye contact and real-time spontaneous moments. And you should act on those moments by downloading Cusp, creating a profile, and every time you see someone attractive, pressing the I made eye contact button. I am Rushabh Mehta, the founder of Cusp, and today we have with us Murtaza Attarwala. Very nice to have you. Thank you. So Murtaza, how have you been? First question. I have been great these days. अभी internals खत्म हुआ है college का, so I'm chill. Okay, ठीक है. अभी time है exams के लिए, so I've been great. That's good, man. That's good. So I heard you're a photographer and a writer. Both by passion. Okay. बाकी डिग्री के लिए तो कंप्यूटर साइंस चल ही रहा है. फोटोग्राफी मुझे इंटरेस्ट है. माई ग्रेट ग्रैंड फादर हैव बीन अ फोटोग्राफर बाय हिमसेल्फ, सो द फोटोग्राफिक जीन्स एंड ऑल एवरीथिंग इन मी. एंड सो या आई डू प्रैक्टिस अ बिट मोबाइल फोटोग्राफी वगैरह. कैमरा लेने का भी मौका मिला नहीं, बट सून. एंड अबाउट द राइटिंग पार्ट, I used to do actively, but since last 1.5 years, I'm not that active with that. Okay. Can you share a few things that you have written in the past? Like what have they been? Have they been? It's one of the poems have been about my father. Like basically, I posted that on Father's Day, and one writing has been around the words tried and tired, like how similar they are written, but it means a lot, like how we have been trying for this but are tired of trying for that again. So that's a connection. Yeah, that's almost like a contradiction between the correct. We have been trying for a long time but are tired of trying for it. The tired of trying is the main line in that. That's great, man. That's great. So tell our viewers a little bit about you. Obviously you're Murtaza. How old are you? What's like your family background? Where you based out of right now? Relationship status, personal interests, just general introduction. Sure. As you know, my name is Murtaza. Currently, I'm 20, pursuing my degree in computer science. And my family background has been very basic. My dad has a job. He's an IT head in the company. My mom is a housewife. Part-time, she practices baking and tuition teacher. She's a tuition teacher also. Great. And I've been living in Mumbai for the past 20 years of my life. Got it. And my native is from Nagpur. I have a sibling 2 years younger, and उसने भी देखा में कंप्यूटर साइंस से लिया हुआ है. वो तो इंडियन सिबलिंग्स की बोलते हैं ना, इंजीनियरिंग. इंडियन पेरेंट्स भले फोर्स ना करे, उसने खुद से ले लिया कंप्यूटर साइंस के. भाई ने किया तो मैं भी करूँगा. I'm like ठीक है भाई, तेरी मर्जी है. क्या कर सकते हैं. That's good, man. That's good. Thank you. And where can people find you on Instagram? My Instagram profile is Murtaza, MURTAZA.ATT. Murtaza.att. So guys, hit him up. Anything about photography, writing, he's your man. Great. So let's get started with the first question, which is, have you used dating apps? Not really, but recently downloaded Bumble, but barely used it for a week or two, and now I'm bored with it. Okay. Like I don't even open it now. बस अकाउंट बना हुआ है उसके ऊपर. कोई मैच नहीं मिला, वो बात अलग है. That's the main part. No मैच नहीं मिल रहा है यार. Yeah, see, Tinder, Bumble, Hinge are engineered to keep men out of the equation and keep women at the very front and center. And like women have tens of matches and men don't even have like one. अभी वो सबके प्रेफरेंसेस के ऊपर भी डिपेंड है. Like what do men look for in a girl? Yeah. Mostly looks, I can say. Correct. And women these days are looking for fictional men. Complete. Books वाले, movies वाले. वो सब बम्बल पे थोड़ी मिलेंगे. बम्बल पे तो एरिया वाले जो भी है. एरिया वही 15 किलोमीटर का रेडियस दिया हुआ है. मुंबई में रहता हूँ, मुझे भिवंडी वाली दिखती रहती है. Mumra to Bhiwandi and back. That's it. Yeah, man, I completely get it. I understand. थाने की भी नहीं दिखाते साले. उसके लिए पे करो. उसके लिए पे करो. How often do you make eye contact?
I'd say very often because I'm a person. While if I'm sitting in a train, I'd look around rather than looking at my phone. Exactly. Either I'll look around or I'll read. That's the only two things I do. But mostly while I'm in train, so I prefer looking around, talking to people. Many times I meet with people and we have common topics to talk about. Just Correct. strangers, like where are you heading? कौन रहता है वहाँ पे? Basically, yeah, just like normal. Hi, hello conversations normally. Otherwise कोई book देख के कोई पूछ लेता है, भाई कैसा book है, अच्छा है, मस्त है, मैं बोला अच्छा है. So basically eye contacts तो बहुत होते हैं मेरे. सही है. That's good to hear, man. Okay. So, how? So right now you just mentioned that men are looking for like good looks in women. Correct. Is that your preference also for the most part, or what are you looking for? What's your ideal woman like? It's like looks can be okayish but the more I prefer is she might be into reading because Okay. I'm a person who is into reading. So I would prefer someone जो read करे, and especially I'm into poetry a lot. So I would prefer someone जो poetry में हो. Okay. And शैलेश लोढ़ा जी की वो एक बोली बात है, अभी उन्होंने लिखी है कि नहीं, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट दैट, कि फूल गिरे फूलों से खुशबू आए, फूल गिरे फूलों से खुशबू आए, मोहब्बत उसी से करूँ जिससे उर्दू आए. Oh. So yeah, I heard from him. I'm not sure if he has written that, but yeah, I heard from him in some Instagram reel. So yeah, I prefer girls who are into poetry, who are into reading. Artistic. Yeah, feminine definitely. women. Artistic side. That's good, man. That's good. So when you downloaded Bumble and you created a profile, what was your dating app bio? What was your? I basically wrote photographer and writer by hobby. Currently pursuing CS, a degree in CS and all. 20 years old. That much, nothing else. Nothing. Nothing much. That's good. That's good. What's the biggest conception that men and women have about dating apps? Like, why do you think there is this gap between the understanding of dating apps? Dating apps, basically, women sometimes are like they're using dating apps for fun. Yeah. Like ठीक है, कोई ना कोई मिल जाएगा, time pass हो जाएगा. But guys are like, they are looking seriously at times. Not everybody, but okay, some of them are really looking seriously कि okay, हाँ, I'll gonna find a match. But नहीं मिलता है. नहीं. Girls mostly swipe fictional men types. Yeah. That is Mostly. 1% of men, basically. That is 1% of men. Like it's like, I'm not generalizing all the females over here, Of course. obviously. But yeah, somewhere I feel that women's कोई बहुत ऐसा अंडरस्टैंडिंग होती है, लाइक कुछ होती है जो सीरियसली तुम्हारे बायो पढ़ने में इंटरेस्टेड है. बाकी तो कोई फोटो देख के स्वाइप कर देगी. सो जो बायो देख के अगर वो तुम्हारे लिए मैच राइट स्वाइप कर रही है, बायो देख के, नॉट इवन लुकिंग एट फोटोज, सो मे बी दैट कैन बी अ बेटर मैच रेदर देन समवन जो फोटोज देख के लाइक कर रही है. Correct. More intellectual preferences Correct. are better. Yeah, correct. Lovely. So you're a Gen Z, obviously. I'm a millennial. Most of the people in this office are millennials. So I want to understand from you the definition or the concept of situationships. Honestly, being a Gen Z person, I have not really been exposed to this topic of situationship. Like maybe मुझे कभी चांस ही नहीं मिला ये एक्सप्लोर करने का, कभी जरूरत भी नहीं साइंस में इतने बिजी है किताबों से ही मौका नहीं मिलता. बेसिकली मुझे अभी तक समझ भी नहीं आया कि सिचुएशनशिप टेक्निकली कैसा होता है. मेरे लिए देयर आर टू थिंग्स, लाइक आई लाइक समवन, आई रियली लव समवन. Correct. वी कैन लाइक मल्टीपल पीपल एट अ टाइम, बट वी कैन नॉट लव मल्टीपल पीपल एट अ टाइम. Sure. सो मुझे तो बेसिकली मेरे लिए तो यही दो कॉन्सेप्ट है, लाइकिंग समवन, लविंग समवन. Casual dating and long-term dating. Correct. Situationship is God knows where. करना भी नहीं आता, करना भी नहीं है. बस तू मिलेनियल्स वाला ही है. हाँ, that's what. मैं थोड़ा ही दूर हूँ, बट मैं तुम्हारे वाला ही हूँ. So, when talking to a girl on a dating app or otherwise, like you said, you're traveling in trains and buses, or, you're just walking around and you find someone attractive, you try and go talk to her. What is your opening line? How do you start the conversation? I feel being honest is very important. If I find her attire attractive, or maybe her earring can be attractive as well. Right. So I'll just go catch a hi, hello, random hi, hello. And if I think that she is के ऐसा टाइप की कि भाई मैं उसको बोलूँ तो ऑफेंड नहीं होगी. Right. अगर मेरे जैसा हाई हेलो मुझे लगा तो ही मैं आगे बोलूँगा, वरना विल लाइक मैं सब घुमा दूंगा बात को कि ये एड्रेस किधर है, वो एड्रेस किधर है. रिस्क नहीं चाहिए. आज की तारीख में ये सबसे बड़ा रिस्क है. किसी को बोलने कुछ जाओ, समझ कुछ और जाता है.
और फिर लग जाएंगे। फेमिनिज्म सर पे आ गया है, सर पे चढ़ गया है। बहुत, बट देर आर फ्यू गर्ल्स ऑब्वियसली हुम आई रियली नो, जैसे माई फ्रेंड, जैसे मेरी बात शुरू हुई थी ऐसे ही, लाइक वी मेट समवेयर रैंडमली एंड देन वी स्टार्टेड टॉकिंग एंड वो अभी तक फ्रेंड्स है. It's been a long 1.5 year and all, but we have met like this and I've met a lot of people like that. So सब ऐसे नहीं होते, but mostly ऐसा होते भाई ऑफेंड हो जाते हैं mostly. उसका उनका कुछ कर नहीं सकते. हाँ वही, that's why. And so how many women do you approach on a weekly basis on average? Zero point में आंसर दे सकते हैं. चलो ठीक है. But it's been like so far, like in the last few years you can say 5-10 times ऐसे. मेरे कॉलेज लाइफ में अभी जैसा I've been a part of a lot of events, so events पे तो अप्रोच करना ही पड़ता है लोगों को. So yeah, ये भी कॉलेज में समझ लो 10-15 से समझ सकते हैं. ऐसा कभी कोई ऐसा इवेंट चल रहा है तभी, या कुछ ऐसा फंक्शन है तभी बात होती है. ऐसा जनरली सर ट्रेडिशनल वीक हो गया, रोज डे, टाई डे हो गया कॉलेजेस का, तब अच्छी खासी बात हो जाती है रैंडम्स से भी. बट ऐसा जनरली तो टाइम भी नहीं मिलता है और सिचुएशन वैसे नहीं होती है. वो अपनी क्लास में जा रही है, मैं अपनी क्लास में जा रहा हूँ. बिल्कुल वही मतलब. हाँ यार, assume that you're walking in Marine Drive or you're in a fancy restaurant with your friends and you see like an extremely attractive girl on the other table. She's by herself, she's wearing this super gorgeous dress. Would you go and talk to her, or would you just be like, I definitely give it a try actually. You will. I would definitely give it a try. Like I'll just have a casual hi, hello. I'll introduce myself in 2 lines. Right. And if she introduces back herself, then I may think about, okay, ये बात करने जैसी है. So then I can talk, okay, your dress is quite attractive. Where did you get it from, etc. etc. Right. अकेली बैठी हो तो अच्छी बात है, नहीं तो फ्रेंड से थोड़ी बहुत बात तो हो ही जाएगी. वही तो उसकी दोस्ती चाहिए. सही है. Do you believe in love at first sight? Not really, but it's like अगर मुझे फर्स्ट साइट में अच्छी लगी तो I'd rather think of building a connection. Like अगर अच्छी है देखने में, I'd try talking to her. अगर if she reciprocates well, then we can build a mutual connection. Right. Building mutual connection is more important. Like love at first sight, उसको नहीं हुआ तो क्या फायदा फिर? लव एट फर्स्ट साइट तो एक ही को होता है, फिर दूसरे को बाद में होता है, मतलब जब भी. Right. So according to you, what are some major red flags in women? Like when you encounter a particular behavior or a personality trait that makes you go like, she's a no. Finding a girl or a woman who listens well is rare currently. Yep. So I'd prefer someone who listens to me well. She doesn't need to be very much attractive or very much good looking. She can be moderate attractive, moderately good looking, but she should be understanding. Obviously, she should be good at listening. Yep. You have a lot to teach her. Yeah, not really. I'm also a good listener. I think so at least, and a lot of my friends say that I'm a good listener. So I'd prefer at least kabhi jab when I'm speaking, so she should listen calmly and peacefully to me, help me with the solutions for the problems which I'm facing right now. Right. That's about it. Yeah, that's understanding is the most important thing for me right now. Being in computer science, no one really understands us. हम मशीन को समझ रहे हैं, हमको कोई समझ लो यार. कौन समझेगा? हम तो मशीन तक को समझ रहे हैं. I love it, man. I love it. Are you in a relationship right now? No. You're not? Okay. No, not at all. When was your last relationship? I'd preferably say not an exact relationship, but I liked someone, but it didn't work well. And it was a mutual, we were on a point, okay, no, it's not working, so let's just let it be and not stretch it out a lot. So yeah, that's fine. And so you went out for a few dates, but it didn't turn out to be. It didn't turn out to be well, and like nahi baza raha, theek hai. So that's cool, man. Happens to us all. So what is your definition of love? Yeah, and how has that kind of changed? Like when you first fell into love versus now, when you've been through some women and you've written more and you've done some photography, explored life. How has the definition of love changed over time? Initially into my teens, like I've just crossed my teens. Okay, initially into my teens, I was the type, okay, love at first sight types. बहुत सारे मतलब ऐसा हुआ भी कि बात करने के बाद बात बनी नहीं, तब मुझे ऐसा लगता कि नहीं मिल जाएगी, कोई ना कोई मिल जाएगी. बट ओवर द टाइम एज लाइफ ग्रोज आई फील लाइक लव एट फर्स्ट साइट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई म्यूचुअल कनेक्शन बनना चाहिए. जितना कनेक्शन म्यूचुअल होगा दोनों तरफ से,
इफ आई एम गिविंग हर अ रोज शी शुड इवन गिव मी बैक. वही वाला नहीं, दूसरा वाला. हाँ. हाँ, सही बात है. So yeah, I feel like it should be 50-50, not even 60-40 but 50-50. जितना मैं कर रहा हूँ उतना ही एफर्ट्स तुम्हें भी देना है, भले तुम किसी अलग फील्ड में दो, मैं किसी अलग फील्ड में देता हूँ. Right. But yeah, it should be 50-50 for both the sides. Then only a relationship can work well. That's good, yeah. What's your definition of an alpha man? Who's an alpha man? Can you define a little bit? That's what I'm asking you. So basically how people categorize alpha men as, the men that, obviously have their life together, their money is great, they're in great shape, they're famous, they're rich, and like they're like almost playboys, they can get any women they want, and they choose who to pick. So that is like the more stereotypical, definition of alpha men. All these Bollywood actors will show you that alpha male stereotype on screen, Salman Khan and all. So, but according to you, like, the 20-year-old from Mumbai is still in college. What's his definition of an alpha man? Basically, I feel like an alpha man can be someone जिसके पास एक उसकी लड़की फिक्स हो, मतलब okay, गर्लफ्रेंड जिससे वो आगे शादी करने वाला है, ऑब्वियसली एक ऐसा वो फिक्स होना चाहिए ऐसा. देन उसका जो करियर है वो डिसाइडेड होना चाहिए कि ओके इसमें मुझे आगे परस्यू करना है. सो लाइक बेसिकली जितना उसका लाइफ सॉर्टेड हो अभी होगा, आगे जाके उतना ज़्यादा सॉर्टेड होगा अच्छे से. सो इट्स गुड इफ द लाइफ इज सॉर्टेड, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है rather than anything else. पैसा तो कमाने के लिए बहुत टाइम है, बट अभी किस जगह पे पैसा कमा सकते हो, तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट में पैसा कमाओगे तो ज़्यादा अच्छी बात है. बाकी तो तुम कमा ही लोगे कहीं ना कहीं भी. सही बात है. Do you have like a funny or an interesting story from your dating life, like when you went out or when you matched with a girl on Tinder, Bumble, whatever, when you ended up meeting her and things didn't turn out to be the way you thought they would? Yeah, so I met this girl. So I went out with her for once, and उसके बाद से हमारी बात ही नहीं हुई. Like right. I know वो थोड़ा सा awkward था dating, क्योंकि वो बहुत silent types थी और मैं थोड़ा, मैं भी try कर रहा था बात करने की. मैं कितना questions पूछूं, अगर वो बात ही नहीं कर रही तो मैं कितना questions पूछूं. So I went out, but like घर पे जाके हमने थोड़ा फोटोज भी खींचे 2-4. उसने घर पे जाके फोटोज भी नहीं मांगे मेरे से. अच्छा. और बात ही नहीं की उस दिन के बाद. बट कैसे पता नहीं, मुझे एक चांस मिला कि ओके आई गॉट इन माई टीम. कॉलेज की बात है ये. गॉट इन माई टीम, और अननोइंगली मैंने 2-4 लोगों को बोला भाई कमरा साफ करो, और उसमें वो भी एक थी. एंड माई फ्रेंड वाज लाइक ब्रो तू उसे झाड़ू मरवा रहा है. I'm like मैंने इंटेंशनली नहीं किया यार. Oh shit, okay. I'm like नहीं मैंने नहीं बोला था इसको मारने, मैंने 2-4 को बोला था, उसमें से वो एक निकली. उस रात कुछ लिखा था कि आज मेरे जहन में ये दर्द है कुछ नहीं. मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ओके भले तुम्हें डेट पसंद नहीं आया, बट वी कुड हैव एन एंडिंग कॉन्वर्सेशन कि ओके इट वाज ठीक ठाक अच्छा था, बट आगे नहीं जाएंगे बाहर. लाइक फाइन ना, तुम बता दो नहीं जाना तो वो ठीक है. अननोइंगली बात बंद करके कोई मतलब नहीं है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर रखो. करेक्ट. For the men out there, men your age, younger to you, and possibly even older, how do you handle rejection from females, rejection from teachers, work? That being in computer science, dude, हमारा प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो रहा है. Like I know the feeling of being rejected, but according to you, how do you handle rejections in general? In general, one should be like, अगर तुम किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हो तो you should be bold enough to approach her in a matured way. ऐसा नहीं कि उसके सामने जाके बोल रहे हो मेरे को तू पसंद है. नहीं, I like you and I would like to go out. बेसिक बात, सीधी बात करो एकदम. हाँ बोली तो गुड, ना बोली तो रिस्पेक्ट हर डिसीजन के. उसको नहीं जाना है बाहर तुम्हारे साथ completely. भले एक बार जाके फिर वो दूसरी बार तुम्हारे साथ नहीं गई, वो भी तुम एक्सपेक्ट करो कि ठीक है आज के बाद वो मेरे साथ बाहर नहीं जाएगी कभी. अपने स्टैंडर्ड्स को लो रखो कि भाई अगर उसने नहीं भी एक्सेप्ट किया, सो तुमको ऐसा बोलते ना, उसके लिए कोई ग्रज नहीं रहना चाहिए मन में. क्या मतलब है लाइक फिर तुम उसको स्टॉक कर रहे हो, ये वो बार बार टेक्स्ट कर रहे हो, भाई डीएम में कर रहे हो, कोई सेंस नहीं बनता है. फेस टू फेस पूछ लिया, ना बोल दिया ठीक है. एंड आई रियली से कि अगर किसी को अप्रोच करना है तो फेस टू फेस बेटर है रेदर देन टेक्सटिंग दम इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप.
उस पर तो नहीं करना चाहिए अनलेस यू आर लेफ्ट विद नो चॉइस. फेस टू फेस अगर पॉसिबल है सो डेफिनेटली वन शुड गो फॉर दैट एंड इट वर्क्स रियली वेल. मैंने कितनी बार लड़कियों के लिए अजम्पशन किया था कि ओके ये तो बात भी नहीं करेगी, बट व्हेन आई रियली हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हर शी टर्न्ड आउट टू बी वेल एंड ईदर वी आर गुड फ्रेंड्स और वी हैड वेंट आउट फॉर वंस और ट्वाइस ऐसा. Great, man. And just in general with life, getting rejected from job offers, universities. जॉब ऑफर्स का रिजेक्शन का तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं अभी के लिए. अभी तक हाँ. एंड या फ्रॉम टीचर्स से थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिला है अगर रिगार्डिंग माय असाइनमेंट्स वगैरह कि भाई ये क्या कैसी हैंड राइटिंग है तुम्हारी, आई विल नॉट एक्सेप्ट दिस. बट ठीक है, तुम अगर देखोगे तो बेसिकली हो सकता है कि तुम कहीं पे गलत हो. एंड इवन इफ यू आर नॉट, जस्ट टेक इट विलफुली राइट नाउ कि ओके ठीक है उसने बोल दिया कल वापस ट्राई कर लेंगे. यू शुड जस्ट कीप ट्राइंग कि कभी ना कभी तो सक्सेसफुल हो ही जाएगा. आज नहीं तो कल प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा तुम्हारा. आज नहीं तो कल किसी और कंपनी में जॉब अप्रूवल मिल जाएगा तुम्हें. ऐसा कोई इशू नहीं है. That's great, man. That's great. According to you, what is more important in a relationship? Physical intimacy or emotional intimacy? I actually read this one thing somewhere that when it comes to relationships, men initially looks for a good physical contact. Yep. I just don't mean something very big, but basically like holding hands in public and all, hugs and all. But whereas women on contrary initially look for an emotional connection. That's right. So basically if you want to build a successful relationship, दोनों को थोड़ा थोड़ा आगे आना पड़ेगा. Women have to lean a little bit towards physical intimacy and men have to lean towards emotional intimacy. Right. दोनों थोड़ा थोड़ा अपना एरिया छोड़ के आगे आओगे तभी एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकता है. अगर तुम बोलते रहोगे कि नहीं मुझे तो फिजिकल इंटिमेसी चाहिए और ये बोलती रहेगी कि नहीं मुझे इमोशनल कनेक्शन चाहिए, तो कुछ नहीं होगा. तुम्हें थोड़ा इमोशनल्स को थोड़ा पीछे छोड़ के थोड़ा आगे आना पड़ेगा. तुम्हें भी थोड़ा आगे आना पड़ेगा. Because I read this somewhere that women are more lean towards emotional intimacy and men are more towards physical intimacy. Correct. That's good, but according to you, for you, what is, and that's generalizing men, being more inclined to the physical side, but for you, also that is true? Yeah, I even prefer like अगर वो लड़की मुझे publicly accept कर सकती है, then I think maybe she is the one. Then I can obviously invest my emotions in her, in the relationship, everywhere. And I think I am good at handling emotions. मेरे खुद के हो, सामने वाले के हो. I'm very good at handling that. So I will definitely give a very good emotional connection. But for that, you too have to lean a bit towards the physical intimacy. Of course. Maybe holding hands, hugs, वगैरह वगैरह. Right. So you should not just be very shy towards everything. ऐसा एकदम वो छुई मुई टाइप लड़कियाँ नहीं. Be bold enough. हाथ पकड़ा है तो पकड़ा है. उसमें क्या है? If you are attracted to me, then what's the problem? Exactly. अगर attraction है तो express करो. And obviously attraction or love can be expressed via physical intimacy more, I can say. Right. Holding hands is a form of love, obviously. Sure. So yeah, I feel like physical intimacy ज़्यादा है थोड़ा मेरे लिए. How many dates does it require for you to make the first move physically? Trying to lean in for that kiss or like taking steps forward. Like how many dates does it really need? Basically it's like maybe 3 to 5 or like अगर हम लोग 3 to 5 dates में we have a good connection. You're laughing and like sharing exactly stuff, and texting. I feel like okay now अगर दोनों भी ऐसे point पे है कि okay I can make a move for that. Yeah. Then definitely I think I can. Average 5 पकड़ सकते हैं. In the first 5 dates you हमको समझ में आ जाएगा एक दूसरे का टाइप क्या है. डू वी मैच द टाइप. अगर मैच हो रहा है तो आगे लेके जाओ, नहीं हो रहा है तो मत लेके जाओ. अगर मैच ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है, स्ट्रेच करके कोई मतलब नहीं है. बेटर गिव इट अ क्लोजर, अर्ली क्लोजर. वो अच्छी बात है. Surely. So on Bumble, you swiped on profiles. So how did you like swiping as an activity? Not that good actually. Like swiping का क्या है, वो तो हम Instagram पे भी वही कर रहे हैं पूरे दिन. Scrolling, swiping. वही कुछ फर्क नहीं पड़ता. बट इतना कुछ है भी नहीं. मतलब मैंने भी फोटोज देख के ही लोगों को राइट लेफ्ट किया है ऑब्वियसली. सो आई नो सामने वाली भी वही देख के करेगी. सो आई डोंट जस्ट थिंक ये फोटोज देख के करने का कॉन्सेप्ट थोड़ा वियर्ड है मेरे लिए. लाइक मजा भी नहीं आ रहा. अभी उसमें काफी पुराना भी हो गया वो. Correct. So which leads me to my next question. If you could build your own dating app, like what features would it include? Like what is the feature that you want to see in dating apps? Being a person who loves to write, I feel like अगर कोई ऐसा ऐप हो जो तुम्हारी राइटिंग्स को
पब्लिकली ला सके और कोई तुम्हारी राइटिंग्स को देख के अट्रैक्ट हो सकता है. नॉट जस्ट आई मीन योर राइटिंग्स, मे बी अदर आर्टिस्टिक स्टफ, एनी आर्ट स्टफ. तुम You have Instagram for that. करेक्ट, बट यू नो वो तुम्हें किसी एक स्पेसिफिक प्रोफाइल में जाके फिर उसको देखना पड़ता है. लाइक सारे लोग अभी जैसा आई लव फोटोग्राफी बट मैं इतना कॉन्स्टेंटली पोस्ट नहीं करता हूँ. सो द अदर पर्सन माइट नॉट नो कि मैं इतना फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड हूँ. बट इफ देयर इज एन ऐप जो तुम्हारे आर्ट के बेस पे तुम्हें मैच दे रहा है, सो आई फील लाइक वो ज़्यादा अच्छा होगा. मे बी राइटर्स कैन मैच विद राइटर्स और फोटोग्राफर्स कैन मैच विद फोटोग्राफर्स. एनीथिंग इन आर्टिस्टिक पीपल शुड मैच विद आर्टिस्टिक पीपल. आई फील Absolutely. वो ज़्यादा मज़ा आता है. आर्ट्स वाले के साथ मज़ा आता है. Engineers के साथ. डॉक्टर्स के साथ लगे ही पड़े हैं. डॉक्टर्स बाहर नहीं जाते. But even on the app that you're describing, it'll involve swiping. Like if you're an artist and you've created a profile, so you would have to ultimately swipe on other artists' profiles. स्वाइपिंग एज एन एक्टिविटी इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि तुम क्या देख के स्वाइप कर रहे हो. स्वाइप करने में इतना प्रॉब्लम नहीं, बट तुम क्या देख के स्वाइप करो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Right. तुम किसी का फोटो देख के कर रहे हो, किसी का बायो देख के कर रहे हो, किसी का आर्ट देख के कर रहे हो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. Correct. अभी भी बम्बल पे आई डोंट थिंक ज़्यादा लोग बायो भी पढ़ते हैं. आधे लोग तो बायो लिखते ही नहीं है. बायो में अपना इंस्टाग्राम आईडी दे के रखा है. लाइक क्यों करूँ मैं तुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो? आई डोंट इवन नो यू यार. You know, that's precisely why I created Cusp, is to match people based on the eye contact. So now you see someone, you find them attractive, you like their style, and you press a button, and if she also presses the button on the app, then you can get connected. And after this podcast, we'll do a little pilot testing. We'll have you download the app, create a profile, get your feedback. Yeah, Great. I'd love to. great. How many times, like when you made eye contact with someone, did you feel attracted to them? एक होता है कि eye contact हो रहा है, brain traveling, but the other times it's like you lock eyes with someone and you look at them for a second or two and then they're looking at you for 1 or 2 seconds and then you're walking in one direction, she's walking in another direction. So how many times has that happened on average? वीक में 2-3 बार हो ही जाता होगा. True man, that's true. Yeah. कॉलेज में बहुत होता है ऑब्वियसली. कॉलेज क्यों जाते हैं हम? Yup. And what's like the most surprising thing you've learned about yourself through photography or through writing? I feel like I would like to know people, like rather than you speaking words about yourself, I'd like to read you through your body language, through the words you speak, the vocabulary you use, the style of everything you do. I would like to read people. Okay, you can say I'm judging someone, बट आई फील लाइक ओके इफ ये ऐसा कर रहा है तो मे बी इसका ये माइंडसेट हो सकता है. आई प्रोसेस के वो क्या सोच रहा है. आई ट्राई टू जज दैट इस टाइम पे वो क्या सोच रहा है. अगर वो मेरे सामने देख रहा है, वो किस एक्सप्रेशन से देख रहा है, तो मैं वो ज़्यादा जज करने की ट्राई करता हूँ कि भाई क्यों मुझे ये देख रहा है, कैसे देख रहा है, क्या सोच रहा है. Right. So the ability to read into people's thoughts and I love their body language. Right. Correct, absolutely. It is like giving you that ability, writing and photography. Right, absolutely. That's great, man. Alright, so I think those are all the questions. Maybe another, let's end with this. What are you looking forward to in the next year, 6 months to 1 year? In what aspects are you asking about? I mean, you're very close to graduating, and like what's ahead for you? Probably I'll be graduating in the next 6 months, and probably I like probably. I like the use of the word probably because I've been there. जिस हिसाब से सेम 5 जा रहा है, सेम 6 तक पहुंचेंगे क्या? No, you'll make it, man. I hope so. So yeah, probably in the next 6 months I'll be a graduate, and after that I'll be initially looking for a basic job, and after that I'll be getting a few connections. Like my uncle is in IT for the last 10 years, so he might help me get a better job somewhere else, like Bangalore, Pune, वगैरह. Okay. And once I think I am settled into a proper job, then I would try. I should pursue my hobby, which is photography, side by side at least, Okay. and not as a main thing. Like IT कर लिया है तो आगे तो करना ही पड़ेगा, छोड़ तो नहीं सकते उसको. सही बात है. And photography इतना पे नहीं करता है, honestly. Yeah. IT ज़्यादा करता है. True that, man. True that. So Murtaza, do you believe in the hookup culture, which is the most trendy thing right now in Gen Zs especially? I'd say I used to believe it in, but now I feel like nahi yaar, this is not the thing. Why not? Because कब तक करोगे? Like
फिर देन एक पॉइंट के बाद कोई एक तो ऐसा होता ही है कि अभी मुझे तुम फॉर एवर के लिए पसंद हो एंड एक को नहीं होता है. हाँ. सो आई जस्ट फील लाइक नहीं यार, नहीं मत करो. इससे अच्छा तो एक प्रॉपर म्यूचुअल रिलेशनशिप रख लो, वो ज़्यादा बेटर है. सो या That's good, man. That's good. So we discussed about this, that on dating apps it's mostly casual, short-term, dates that you find. But dating apps have a possibility of connecting people on a long-term basis. Like, do you know anyone that's in a long-term relationship through dating apps? No, I personally don't know any who have been in relationship because of a dating app, and I myself haven't found any matches. क्या कर सकते हैं? So I don't really know, but हो भी सकता है, but not everybody is same. एक या दो couple out of 10 can be a good match for each other forever types. हो भी सकता है, never know. Right. Thanks a lot, Murtaza. Those are all the things we had for you today. Really appreciate you coming onto the podcast, spending some time with us and sharing with our viewers what you think about love, relationships, dating apps. Takes courage to come on camera and talk about things openly. Absolutely. So really appreciate it. Thank you so much. Thanks so much. Thank you.